and abroad, that most of the students have alhamdulillah got admissions, and now they are studying in their different class, different courses. And after that, we have provide different opportunities in the students, like scholarship based and other these. And after that, our second initiative, which is True Lane Travels, where we are booking on online tickets and on Tawaqal based and reservations, whether there's in the services we provide in a very short time, in a very little time, and we promise it with our all of our beneficiaries are very happy with our service and with our teamwork who work with us. And now we have other project that's on social work base, that's we are working on women empowerment. Also we have taken part of social work sector, that's the NGO part, like we are working on different social issues, like we provide some assistance to the needy people in the valley in different districts. We are providing help with some widows, some disability persons, and we provide them a good platform and opportunities where we have make them a chain and linkage with the government linkage, and make them benefited with the help of our director and our all the teams. We have almost we have hundreds of the employees in this company. Still we have the coordinators, sub district coordinators, and other managers, as well as in all over the Kashmir and all in almost in states, also other states. And we have almost provided different opportunities to the youths, and especially those who are in, as you know, there's a vast scope of different education sectors, and we provide them with the help of our worthy director and other our team members. So I want to tell you something again, Edith, that our directors always support us, and our team workers, and we have a different parts. And our another part is that we have a career counseling sessions. Beyond this part, being in, we are the an administrator with the help of different government sectors. We organize counseling sessions with the youths, with women empowerment cells in different states, in different regions, especially in Kashmir, in Jammu also. We help different students if they have need any kind of confusion, or if they are in a depression. We counseling them through our company. We have a counseling cell also available in our company, and we have a different, or as already mentioned, that we have different branches in the Kashmir Valley, and we will try to uh, vast our this, we can say, our the process, which we will open a lot more branch in future. So it was little bit introduction about our company, that we are parts working through land travels, and like education sector, like social work sector we have taken in this. So I thought that sir is I'm audible, everybody's audible na? Yes, yes, yes. Please continue. Please continue. Oh, okay, sir. And the main aim of objective of this company to open that to generate an employment. As you know, that there's a in all over the India, there's much needed that the youths are unemployed. So this company had taken initiative to provide placement and security services. That is the part of this company, the under section. So we have provided, and we have already enrolled hundreds of students to on this placement services in different. We have tie up with different hospitals. We have tie up with different security concern agencies who are need in security placement for the employment generation. And we are getting very good response from the said government sectors, some private sectors. They are welcoming our step, and we provide a best service, best with a good character security guards. We provide a good character, whatever they have needed, we provide with an positive manner, and they are very happy with us. So and I thought I might be with the I would like to invite other guests also. I request to the host. Shall I proceed, sir? Yes, yes, sir. Please continue. So And one more initiative which we have taken, that's much important and need, that there are the dropout ratios of the students, and we have given them the
vocational training centers. We registered the students. Especially, there are a lot more companies who are working, especially on the education sector, education consult report, the admissions in Kashmir Valley and different states and different universities, whether Kashmir Valley or outside of the universities abroad. But those students who have dropped out, but there is no initiative for them. But our company have taken this unique initiative. We admitted those students, we counsel them, we guide them, and provide them an opportunity to gain education in future, like vocational training centers, TLC, that the government have initiated different initiatives. But there was a very good gap between the people, between those students who are from the marginalized village, who are far-flung areas. But we gathered them, we organized sessions with them, webinars with them, and get him on the track. So that was our, we can say from our side, sir, with our worthy guest, this was our unique initiative, because most of them, they are social work sector, they are working on them. But uh, we have taken this unique initiative because we face this kind of initiatives. A lot more parents called us that uh, our kids have dropped out. What is the opportunity for them? They want to get an education. Is there any opportunity? As you know that the education consultants are, they are asking that if you have 10 to, if you have 10 plus to your graduation, we can ask you for further courses. But this initiative has grown up, and we the parents in the all over the state have welcomed us this setup, that you have given this opportunity. So I thought, before inviting our worthy guest, I thought I will request to our Director, Tawaqal Solution Services, Mr. Muhammad Yusuf Dar Sahab, for the welcome to our guest. And after that, uh, I will read the profile of our worthy guest, Suryakant Sharma sir, and after that, I will invite him, because I know there the lot more people are joining us, and lot more people have to join us. And after that, with the permission of our guest, sir, I want to convey this message to all the participants who have attended this webinar, that you will receive an e-certificate after completion of this webinar, after listening with our worthy guest and our host and other things. So I think, yeah, if our direct sub is available, so I request Mr. Muhammad Yusuf Sahab to welcome our guest, and after that I will read the profile of guest, and after that we all get the opportunity to listen our worthy guest. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले मैं जी, शुक्रिया अदा करता हूँ उस पाक परवरदिगार की जिसने हमें इस जहां में आने की फुर्सत दी। और इसके बाद मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ श्रीकांत शर्मा साहब जी का, जिसने अपना कीमती टाइम निकाल के इस मीटिंग में एक मेहमान खुशी की हैसियत से और मेरी तरफ से तमाम ज्वाइन करने वाले मेंबर्स का बहुत 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 शुक्रिया, और हुसैन साहब की भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। तो पहले मैं चाहता था श्रीकांत साहब को दावा दे, लेकिन हुसैन साहब ने, अब मैं कोई ऐसी बात बाकी नहीं रही जो कहने के बगैर रही। तो थोड़ी सी इंट्रोडक्शन अपनी पे बताऊं। जो ये तवक्कल है, तवक्कल मीन्स ट्रस्ट इन गॉड। जी, तवक्कल मैंने जब कंपनी का आगाज किया है, मेरे जहन में कुछ नहीं आया था। तो एक ही बार कहीं से मुझे ये आवाज आई कि खुदा पर भरोसा करके आप निकल जाओ घर से। और स्टार्टिंग जो जिंदगी है उसमें भी मैंने बहुत से मुश्किलात उठाए, जैसे 2000 में, इससे पहले भी। और तवक्कल करने के बाद मैंने खुदा पर तवक्कल किया, भगवान पर तवक्कल किया, ट्रस्ट किया, और मैं अकेले पहले निकला। इसके साथ साथ मैंने खुदा का सहारा लेके बीच बीच में कुछ कुछ दोस्त जुड़ गए, और तब से हमने ये काम शुरू किया। खुदा की मदद से मैं अब इस नदी, जैसे फ्लड आया कश्मीर में 2014 में, इससे पहले 2008 से मैंने गवर्नमेंट
एंड सिविल कंस्ट्रक्शन में ए क्लास कंस्ट्रक्शन रजिस्ट्रेशन हासिल की। इसके बाद मैंने पीडीडी की ए क्लास रजिस्ट्रेशन हासिल की। इसके बाद खुदा की मदद से मैं टावर विजन ऑफ इंडिया का सिंगल वेंडर हूँ कश्मीर में। तो ये सब जो मैंने किया ना, मैं खुद करने वाला नहीं हूं, बल्कि मैं कोई करने वाला और है, और लोगों की दुआ है, और जो मेरे साथ रहते हैं। मैं अपनी नियम जिंदगी का बता रहा हूं। बाकी जो कंपनी के रिलेटेड हुसैन साहब ने मेरे ख्याल से बहुत अच्छी तरह इसको साबित किया, मेरे लिए कोई मौका नहीं रखा। तो अब मैं पर्सनल लेवल पे आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि अब मैं पर्सनली आपका आधार अपना कराता हूं। तो जैसे फ्लड में, जैसे मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ गवर्नमेंट का, फ्लड में मैंने 230 मकान बनाए, 230 रिहेबिलिटेशन हाउसेस मैंने बनाए हैं। इसके बाद 2016 में किट्स वगैरह पोर फैमिली में हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। और इसके बाद जो बड़े मरहले आए कश्मीर में, इनका मैं बता रहा हूं। 2020 में यहाँ का जो 2020 में जैसे कोविड का हुआ, यहाँ पर एक बहरान खड़ा। उस टाइम जैसे हुसैन साहब, बाकी हमारे मेंबर्स ने भी, उसमें हमने पहला ये काम किया, हमने पीपी बनाए, जिसका अंदाजा कहीं अस्पतालों में नहीं पता था। हमने उस टाइम 50,000 पीपी बनाए, जो अपने अपने कपड़े से खरीद के, और उन पीपी को तैयार करने में लेडीज और गरीब गुरबात जो इसमें काम कर रहे थे, उनको भी हमने उसमें इंट्रोड्यूस किया, ताकि वो भी 10 पैसा कमाए। और 3 लाख के करीब हमने मास्क बनाए। ये भी हमने प्रोवाइड किए हैं कहीं मदद लेके। तो इसमें अभी भी वो चल रहा है। कंसंट्रेटर जैसे 150 हमने मंगाए, उसमें बहुत मदद लोगों का भी है और डोनर्स का भी है, लेकिन करने वाला कोई और होता है, बहाना हमारा होता है। तो इसके साथ साथ हमारा आज भी जो है, ये मेरा जो काम है ना, ज्यादातर क्योंकि मैंने भी गरीबी देखी है और गरीबों के साथ भी बैठा हूं। सब कुछ जो करता हूं, अगर हम खुदा से दुआ करेंगे, हमें खुदा हमें रिजिक अता करा। लेकिन जब हम किसी का रिजिक बंद करेंगे तो खुदा नहीं देगा। हम भगवान से यही आशना करते, भगवान हमें रहम कीजिए। जब हम खुद किसी पर रहम नहीं करेंगे, तो भगवान के आगे कोई ये बोलने का हक ही नहीं है। पहले अपने आप को हमें संवारना है, पहले अपने आप से हमें किसी को देना है, तब भगवान के आगे हाथ फैलाना, तब वो 10 गुना देगा आपको ज्यादा। तो ऐसा मैं बताता हूं अपनी फैमिली के रिलेटेड। अब अल्लाह ताला ने ऐसा कि मैं चाहता हूं, जो बच्चे हैं, रिहेबिलिटेशन है जो हुसैन साहब ने आपको प्रोड्यूस किए हैं, उसमें हम खुद भी अपने प्रपोज से भी और लोगों के सहारे से भी इंस्टीट्यूशन कर रहे हैं, प्रोग्राम्स कर रहे हैं, सीक्रेट प्रोग्राम्स कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह इसको बढ़ाने में, जैसे शर्मा साहब हमारे मेहमान खुशी से है, इनसे भी उम्मीद रखते हैं हमारी इस मिशन को आगे चलाने में सहायता दे। बाकी थैंक्स, शुक्रिया। Thank you so much, Director Saab, for your precious words, and you have elaborate about how you started your company and how hindrances you have faced, and you have trust on the God, and on that trust you worked and the people joined you, and nowadays it's a very huge contribution from your side. Thank you so much for joining us. And now, before joining our worthy guest today, am I audible, sir? Yes, you are audible. Oh, thank you so much. And before, so I want to, I don't know how much thankful I am to our worthy Suryakant sir, thank you so much. I don't have words. I apologize because I'm not able to take your being a guest of this program, and I'm hosting this program. And when I will go through your profile, sir. I'm nowhere available in to introduce yourself, sir. Thank you for giving me this opportunity. So I will not take much. I will not consume too much time. So directly, I want to give his profile a little bit. That the Suryakant Sharma is a commerce graduate and masters in law alum with specialization in corporate laws. He's also a chartered
Associate of Indian Institute of Banking and Finance, IIBF. Uh, Shri Sharma has over 35 years experience in banking and finance and security marketing, and had initially served a leading financial institution, thereafter in Department of Financial Service, Ministry of Finance, Government of India, and finally in SCBI. Shri Sharma joined Securities and Exchange Board of Indian SEBI in 2003 and served in SEBI for more than 16 years in different departments of SEBI. Lastly, in addition to other assignments in SEBI, he was in charge of Office of the Investor Awareness and Education in SEBI Northern region for more than 5 years. And in this period, more than 50,000 financial literacy and investor awareness programs IAPSY conducted, and he himself had addressed a guest speaker in more than 600 IAPs. I cannot say how much 600 programs, and he used to be a guest speaker. That is outstanding. And Shri Sharma was also a member of working group of NCRT for developing vocational courses on mutual funds and trade body for promoting mutual of few NGOs working in the financial literacy and investor awareness in the country. After discrimination from SEBI in 2019, he has joined Association of Mutual in India, AMFI, PAX body of mutual fund in India, as a senior consultant for spreading financial literacy and investor awareness across country almost seasons among citizens since May 2019. Shri Sharma has interacted with the lakes of investors. I mean to say lakes of investors and potential investors, students through more than 700 investor awareness webinars and programs across country and reputed government organizations, research institutions, leading educational and professional institutions, corporate startups, women centers, NGOs, and others. It's not all about, but we can say it's little bit about our worthy guest Suryakant Sharma Sahab, Suryakant Sharma Sahab. So, sir, we are highly thankful to you and mutual funds. Thank you for giving this opportunity, and we don't have words how much we're thankful. And because sir, you have given your very precious time with us. There are hundreds of and have joined to listen your worthy lecture, sir. I request to you to please join, sir. Start your, we can say, sir, your speech, sir. अस्सलाम वालेकुम, सबको नमस्कार और विशेष नमस्कार हमारे मोहम्मद यूसुफ भाई को, वालेकुम सलाम। अपनी जिंदगी समाज के लिए लगाई है। यूसुफ साहब, जिंदगी सबकी अपनी जीते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं, और आप उनमें से एक हो। तो दोबारा आपको बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद, रेस्पेक्ट। And thanks to Mr. Hussain, who had very effectively moderated this program. And I salute all of you who have started this mission through a company for the welfare of the youth and other citizens of the Srinagar and Jammu and Kashmir. We are all brothers and sisters. You might be living in Srinagar, I might be in Delhi. Somebody might be in the south or somebody might be in north, but we are all brothers and sisters. There is no distinction between any of us. It is just a matter of place that where we are living. So I respect all of you, and I also congratulate Mr. Yusuf that he started this company for the social work, basically, not for the profit, but for the social work and for the upliftment of the citizens of the J&K. And he's making people aware about the importance of getting employment. He's making people equipped how to get employment, how to earn money. Because Dr. Yusuf साहब, आप इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि जिंदगी में पैसा बहुत बड़ी चीज है। ऊपर खुदा है, नीचे पैसा ही है। हमें जिंदगी जीने के लिए पैसा चाहिए, सबको पैसा चाहिए, बहुत बहुत पैसा चाहिए, और बार बार पैसा चाहिए। That is why money is very important in our life.
And from where we get money, Yusuf Saab is making people equipped to earn. कुछ काम कीजिए, और उस काम के लिए यूसुफ साहब बच्चों को और यूथ को तैयार कर रहे हैं कि जो कुछ वो काम करेंगे उससे पैसा अर्न करेंगे, और पैसा अर्न करेंगे, अच्छी जिंदगी जिएंगे, दे विल हैव बेटर लाइफ, दे विल हैव कंफर्टेबल लाइफ, देयर चिल्ड्रन विल गेट बेटर एजुकेशन, they will have good and good house, good vehicle, everything to enjoy. That is why money, I again repeat, very very important, and the prime source of money, Yusuf Saab, is the money which we earn. We might be in service, we might be in job, we might be in business, we might be in profession. So whatever we are doing and whatever your students who you are preparing for will do, they will start earning money. So earning money from job or profession or business is the prime source of money for all of us. But there is other source of money, Yusuf Saab. And I deal with the other source of money. I deal with the second source of money. You are dealing with the first source of money. I will deal with the second source of money. And what is that? That is money which I am earning. Of course, the majority of the money which I am earning and which the people will earn will spend on their monthly expenses. Food, travel, rental, lot of things, that necessity, utilities. But out of the money which we earn, Yusuf Saab, one thing is very common with all Indians. And that is in our blood, that is our DNA. And what is that, Yusuf Saab? जितना पैसा हम कमाते हैं, हम कोशिश करते हैं सारा पैसा खर्च ना करें. Whether a person is earning 10,000 or whether a person is 1 lakh rupees or more than that even, every Indian sincerely try to take away some money out of their income. और जो पैसा हम अपनी इनकम से खर्च नहीं करते हैं यूसुफ साहब, उसे हम बचत कहते हैं, सेविंग्स कहते हैं. And saving is in our blood, and we should be proud of it, Mr. Hussain, that Indians are still one of the best savers in the world. हम दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा बचाने वाली कौमों में शुमार हैं, और ये हमारे लिए फक्र की बात है. हम पैसा बचाने में हमारा कोई मुकाबला नहीं है यूसुफ साहब. और विशेष तौर पर हमारी घर की महिलाओं में, यूसुफ साहब आपको याद होगा किस तरह से दादी, नानी या आपकी मम्मी 2-2 रुपए, 4-4 रुपए पैसा बचाती है. That was exemplary, that was unique. का कोई उदाहरण पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलता है. किस तरह से वो 2-2, 4-4 रुपए छोटे छोटे स्मॉल सेविंग दे यूज्ड टू डू. And one more incident, Mr. Yusuf might recall, that when in 2016, when our Prime Minister all of a sudden announced demonetization of notes, currency notes, जब 2016 में प्रधानमंत्री ने अचानक जब पुराने नोट बंद कर दिए थे, तो यूसुफ साहब आपको याद है सबसे ज्यादा पैसा कहाँ मिला था? हमारे घर के डिब्बों से, हमारे घर के बक्सों से. क्यों? कि हमारी घर की फीमेल मेंबर्स पैसा बचाने में, छोटा छोटा पैसा बचाने में बहुत एफिशिएंट थी, आज भी है. इसलिए पैसा बचाना बहुत जरूरी है. सबसे पहली बात मैं आपके यूथ को भी कह देना चाहता हूं, saving is very very important. But 3 things I want to tell particularly youth members, Mr. Yusuf, and your young officers and employees, those who are associated with you. 3 things I want to say, to tell them about saving. The first and foremost thing is start saving right from the first month when you start earning. जब आप पैसा कमाने लगते हैं तभी से पैसा बचाना चालू कीजिए. Start it. And don't be shy. कभी ये मत सोचिए 50 रुपए बचा लूंगा तो क्या होगा, 100 रुपए बच जाएंगे तो क्या होगा, 500 रुपए बच जाएंगे तो क्या होगा. I want to tell you one thing to all of you.
Amount of saving is not important. What important is when you start it. That is most important thing. When you start saving, that is most important thing. And you should start saving right from the first month when you start earning. जब आप पैसा कमाने लगते हैं तब से ही पैसा बचाना चालू कीजिए. चाहे 50 रुपए बचाइए, चाहे 100 रुपए बचाइए, चाहे 500 बचाइए, चाहे 5,000 बचाइए, चाहे 50,000 बचाइए. ये आपकी इनकम पे डिपेंड करेगा, ये आपके फैमिली ऑब्लिगेशंस पे डिपेंड करेगा, लेकिन पैसा बचाइए शुरू से. पहली बात. दूसरी बात, start saving, Mr. Hussain, regularly. Every month you have to save. A single month should not lapse when you don't save the money. Make it a habit. आदत बनाइए कि मुझे हर महीना पैसा बचाना है. हाँ, ये जरूर हो सकता है हुसैन साहब, कभी ज्यादा पैसा बच से जाएगा, कभी कम बचेगा, क्योंकि हमारे घर के खर्चे, कभी नई नई बातें होती रहती है, घर में नई नई चीजें होती रहती है, लेकिन हर महीना कुछ पैसा जरूर बचाना है. और तीसरी आखिरी बात जो मैं बचत के बारे में, सेविंग्स के बारे में कहना चाहता हूं सबको, कीप इंक्रीजिंग योर सेविंग मिस्टर हुसैन विद द इंक्रीज इन योर इनकम. जब आपका सैलरी बढ़ेगा, आपकी आमदनी बढ़ेगा, आपका बिजनेस करते हो तो बिजनेस बढ़ेगा, प्रोफेशन करते हैं प्रोफेशन बढ़ेगा, तो बचत को भी बढ़ाइए. कीप इंक्रीजिंग योर सेविंग, एंड आइडियली इट शुड बी 10% ऑफ योर इंक्रीज in your saving every year. Suppose, Mr. Hussain, you are saving 500 rupees this year. Then next year, Mr. Hussain, you should ideally save not 500 but 550 rupees, because your income will also increase, because your salary will increase. ये तीन बातें अगर जिंदगी में आपने, if you practice these three very small things but very important thing in your life, I can give you confidence, my dear participants, you will have reasonable money in your life. May not be plenty of money, but you will have reasonable money in your life for leading a comfortable life, for taking care of your family obligations, and for leading a comfortable retirement life as well. That is why please do think about these three things of savings. Then the next question arises, Mr. Hussain, what to do with the savings? जो पैसा हम बचाते हैं उसका हम क्या करें? And I have just told you that we used to be one of the best savers in the world. हम पैसा बचाने में हमारा मुकाबला नहीं है, लेकिन बात यहीं खत्म हो जाती है जो गलत है. हम पैसा बचाकर हुसैन साहब कहाँ रखते हैं? घर के बक्सों में रख देते हैं. हमारे घर की फैमिली मेंबर्स क्या करती हैं? छोटे छोटे किचन के डिब्बों में उसको दबा देती हैं. पैसे को घर में रख लिया जाता है. ये सबसे बड़ी गलती है जो हम करते हैं. That is a blunder, Mr. Hussain. We must keep some emergency fund at home. Emergency के लिए घर में पैसा जरूर कुछ होना चाहिए. But it doesn't mean that all money which you are saving should be kept at home. No, that is a wrong practice. That's a blunder. We must not do it. Then what to do? Yes, there is an option. हमारे पास एक और रास्ता है यूसुफ साहब, और वो रास्ता है जो पैसा हम बचा रहे हैं उस पैसे को कहीं लगाएं. डिप्लॉय योर सेविंग्स इन सम प्रोडक्ट्स. और पैसे को कहीं लगाने को हुसैन साहब, यू मस्ट बी नोइंग, इट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट. डिप्लॉइंग योर सेविंग्स इनटू सम प्रोडक्ट, डिप्लॉइंग योर money into some product is called investment. But unfortunately, Mr. Hussain, my generation utterly failed in making investments. We were good savers, but we were not investors. और ये सबसे बड़ी गलती थी जो हमने की. हमने पैसा बचाया लेकिन पैसे को निवेश नहीं किया, हमने पैसे को कहीं इन्वेस्ट नहीं किया. और एक बात आप सारे पार्टिसिपेंट प्लीज डू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली एंड डिस्टिंक्टली, unless you save and invest, you will not be prosper. बहुत कम लोग होंगे जो पैसा कमाकर, जो मेहनत करके बहुत बड़ा अच्छा पैसा इकट्ठा कर लेंगे.
वो इसलिए कर पाएंगे कि उनको बहुत अच्छा पैसा वो कमाते होंगे, बहुत बड़ी सैलरी होगी, बहुत बड़ा बिजनेस होगा, बहुत बड़ा प्रोफेशन होगा। लेकिन ज्यादातर आपके मेरे जैसे मध्यम वर्गीय लोग, we will not be able to have reasonable money in our life only through salary or business or profession. That is why I keep emphasizing in my session, Dr. Sangeeta, that we must invest our savings. जो पैसा हमने बचाया है, we must invest that. And the purpose of investment, Dr. M. Sangeeta, is very clear, very distinct. My money which I have saved should also earn money for me. The one source of money for me is to salary, is the business profit, is the professional fees which I am earning. But the other source is that the money which I have saved must also earn money for me. And that is the second source of money. But second doesn't mean second source. It is equally important, my dear friends. ये सेकंड सोर्स नहीं है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स है. एंड वन डे इन योर लाइफ ए डे शुड कम, एंड आई होप, आई प्रे ऑलमाइटी खुदा भगवान सबको प्रे करता हूं दैट वन डे शुड कम इन योर लाइफ when your income from your salary which will be lesser than the income, Mr. Hussain, which your money will start earning money for you. That is why, but that will be happening, Mr. Hussain, not today, not tomorrow, not in a year or so. It will take time. It will take minimum 15, 20 years. When a situation will come in your life, that your money which you have saved and keeping invested throughout that period will start earning more money for you than the salary which you will be getting. That is why investment is very important. तो अगर अच्छी जिंदगी जीनी है, बच्चों को अच्छी पढ़ाई देनी है, रिटायरमेंट की जिंदगी अच्छी जीनी है, तो हुसैन साहब आपको इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा. देयर इज नो ऑप्शन. और इन्वेस्टमेंट करेंगे वो आगे सारी बात करेंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट समझ लीजिए, इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है. सो वी हैव टू बी सेवर, बट वी ऑल्सो हैव टू बी इन्वेस्टर. And Mr. Hussain, saving is the first step, investment is the second step. Because what if you don't save, what you will invest? That is why I am not belittling the importance of saving, because everything will come out of saving only. But you must not stop at saving. You must continue putting your saving into some product as investment, because the purpose of investment, I again repeat, is to earn money. तो हमें इन्वेस्टर भी बनना है. ये नई जनरेशन को मैं नई जनरेशन को रिक्वेस्ट कर रहा हूं. ऑल योर आई कैन सी यंग फेसेज इन दिस प्रोग्राम, मोस्ट ऑफ देम, एंड आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज बी इन्वेस्टर आल्सो. We were savers, we were not investors. That was a blunder on our part, Mr. Abbas. But you have to be saver and investor as well. And that is absolutely possible. It is not a rocket science. A normal human being, a normal educated person can be an investor. He can invest the money and start earning money out of their investment. So investment is equally important after saving. But we were also investors, Mr. Abbas, you might not be knowing. My generation was also investors. But we were putting our saving into some products which were not giving us any real return. In my generation, Mr. Abbas, you might remember of your father, your other senior uncle and all these things. What they were doing? Where they were putting money, Mr. Vani? They were putting money in bank FD or in LIC. But both were not investment. Mind it. They were not investment. They were sold as investment. It is a fact. That agent will come to you and he will try to convince Mr. Hussain, आप इंश्योरेंस लीजिए,
बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आपको आपका अगर अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई तो इतना पैसा मिलेगा, और अगर डेथ नहीं तो आपको इतना पैसा मिलेगा. बट मिस्टर वानी, he was not telling the real truth. Insurance is not an investment, Mr. Abbas, but important but very necessary, Mr. Abbas. But it is not an investment. Please make the distinction between insurance and investment. And Mr. Wani, why we take insurance? Why we should take insurance? Insurance we take, Mr. Hussain, for the simple reason that in case something happens to me, unfortunately, my family should get a reasonable amount to pull on their life. That's the only purpose of investment. But unfortunately, in our country, insurance has been sold as an investment, which it is not. And nowadays, Mr. Abbas, a very good insurance product is in the market, which were not in our times. But insurance agent will not tell you about this insurance product because he doesn't get good commission on it. He will still sell you money back and endowment policy, LIC policy. No, that is not the proper insurance product. Nowadays, for young people like Mr. Wani, Mr. Abbas, and Mr. Hussain, an insurance product is in the market. That is the name of that insurance product, Mr. Wani, is term insurance, TERM, term insurance. That is real insurance. With a very small amount of premium, you can get a very hefty insurance cover. Mr. Wani, suppose you are between the age of 25 and 30, which you appears to be. You can take an insurance cover of 1 crore rupees by paying a premium of hardly 500, 600 rupees through term insurance. But if you go for the money back and endowment, your premium for 1 crore rupee, Mr. Wani, will not be less than 50,000 or 40,000 or so. Of course, you will get some money if you are alive after 30, 40 years. But Mr. Wani, that money will have no value at all because of inflation. Today, suppose somebody says that you take an insurance of 1 crore and pay a premium of 40, 50,000 for 30 years or 20, 25 years, Mr. Abbas. After 30 years, you will get 2.5 crore or so. But what will be the value of 2.5 crore after 30 years? Have you ever imagined? Nothing. Nothing. Today, 2.5 crore has got value, Mr. Wani. But after 30 years, 2.5 crore or 3 crore will have literally no meaning, no significance of that. You must understand that. That is why I will request all of you, please must take insurance. Definitely. And in term insurance, Mr. Wani, early you take, lesser will be the premium. So don't defer the decision of taking insurance. अरे बाबा ले लेंगे. I am very young. What is going to happen with me? अभी 10 साल बाद लेंगे. No, that is a blunder. Start taking insurance as early as you can. Because early you take, lesser will be the premium. So I was, of course, out of context, I talk about the insurance. That is not my subject, but that is very important. That is why I devoted 3-4 some time on it. I'm coming again to investment. Mr. Bani, you invest. We had also invested, but we were not real invested. I just give you one example, Mr. Abbas. And that example is bank FD, bank fixed deposit. You must be knowing all about the bank FD, Mr. Vani. You might not have done it, but you know about the bank. Bank FD simply means you are giving your money to a bank for a certain period and you will get some return. Call it interest or whatever it might be. Suppose you have 1 lakh rupees, Mr. Abbas, and you give your bank as a FD for 1 year. And bank promises to give you 6% interest, Mr. Vani. After 1 year, what you will get? 6,000 rupees as bank interest. And Mr. Abbas is very happy. Oh, I have earned 6,000 rupees on bank FD. Mr. Abbas, you are not right. I want to explain why you are not right. Of course, you got 6,000 rupees as bank interest, Mr. Abbas. But in this 1 year, when you had given your money to the bank, one thing also keep happening every day. What is that, Mr. Abbas? Have you ever thought of it? Inflation.
महंगाई भी बढ़ती रही। अगर पिछले साल आपने एफडी करवाई और अगर एफडी नहीं करवाते मिस्टर वानी, मिस्टर अब्बास, तो उस 1 लाख रुपए से कोई भी सामान आप ले सकते थे, कोई आइटम ले सकते थे, कोई सर्विसेज अवेल कर ले सकते थे। मिस्टर वानी, कैन यू टेल मी, आफ्टर 1 year would you be able to get same item, same goods and same services at 1 lakh rupees? 1 साल बाद वो आपको उतने में मिलेगा मिस्टर वानी? नो, वी नो इट विल नॉट बी पॉसिबल. व्हाई? बिकॉज द प्राइसेज ऑफ दोज आइटम्स हैव इंक्रीज्ड because of inflation. Suppose the inflation rate has been 5%. Suppose. What does it mean, Mr. Wani? It simply means that last year, whatever you could have purchased at 1 lakh rupees for the same item, same goods and same services, Mr. Abbas, you will need to pay now after 1 year, not 1 lakh rupees, but 1,05,000 rupees. Because the inflation rate has been 5%. So now you see the picture. You got 6,000, but in reality, Mr. Wani, out of 6,000, 5,000 has been eaten by the inflation. Normally, people don't consider this. Arey Baba, I am happy, I got this much amount, that I got. That is wrong thinking. You must analyze your return in the context of inflation. One more thing is there, Mr. Wani, apart from inflation. That is, government takes income tax on most of the return of investment. May it be FD, may it be other investments. Government take some tax on it. And for FD, Mr. Wani, you might not be aware, the rule is very clear. Whatever you earn as bank FD interest, it will be treated as your income and you will have to pay income tax as per your slab. Maybe 10%, maybe 20%, maybe 30%, whatever you are. Suppose Mr. Abbas in 20% bracket, on 6,000, he will need to pay income tax at the rate of 20% on 6,000 also, which becomes 1,200 rupees. Now you see, Mr. Wani, Mr. Abbas was very happy when he got 6,000 rupees as bank interest income. But in reality, out of 6,000, 5,000 has been eaten by the inflation and 1,200 rupees he has to pay as income tax. Did he get anything in reality, Mr. Wani? Nothing. Rather, he had lost 200 rupees. 5,000 plus 1,200. That is why we have to think always that when I invest my money in some products, I should earn some inflation beating and some tax beating return. So real return is inflation. Real return means notional return minus inflation minus tax liability. In this scenario, real return means notional return, Mr. Abbas, was your 6,000 minus 5,000 inflation minus 1,200, no return. It was negative return rather. You lost 200 rupees. So you must understand, whenever you are investing money, you must analyze from the perspective of inflation and tax liability. And suppose the rate, in this example, I take this forward, Mr. Wani. Suppose the interest rate is 8%. In that scenario, Mr. Abbas will get 8,000. Again, we keep inflation at 5%, just for example. So out of 8,000, 5,000 will be eaten by the inflation. Again, 20% income tax on 8,000, that is 1,600. Even after that, there remains 1,400. 8,000 minus 5,000 minus 1,600 and 1,400. And Mr. Abbas, this 1,400 is your real return. So what I want to emphasize here is, unless and until you earn some real return on your investment, the purpose of investment itself is defeated. So we have to work hard to see that we earn some real return on our investments. But why we don't earn real return, Mr. Mani? Have you ever thought of it? What is the reason? We were not fools. We were also educated. But why we were not earning real return on most of our investments, Mr. Abbas? The reason lies in our mind. We have typical mindset, particularly my generation, and you should not have that mindset, Mr. Wani. And to all young generation, I want to tell you. But we were wrong.
But what were mindset, Mr. Vani? Arey Baba, we don't want to take any risk. No. Risk was unthinkable. We will not even listen about the risk. We will not understand the risk. We will simply say no. Whenever any investment things were discussed, what used to be our response? Is there any risk? And somebody say, yes, there is some risk. Then I say, okay, I will not invest there. That was a wrong proposition. Because, my dear friends, Das Babu must be knowing it, in investment, risk is there. Whether you accept it or not, degree of risk will vary from product to product, Mr. Vani. But in most of the investment, risk is there. So, in investment, risk is there. But once risk is there, Mr. Vani, we have to manage our risk. Because the purpose of investment is very simple, to earn maximum return. So we should manage our risk. We should minimize our risk. And Mr. Abbas, how we can do it? By just practicing a very simple formula of 2 words, Mr. Vani. Only 2 words. Think, understand, and invest. I have used only 2 words, Mr. Abbas. Think, understand, and invest. The first word I have used is think. What have to think, Mr. Vani? 2 things about myself. The first and foremost thing is how much risk I can take. What is my risk-taking capacity? And Mr. Vani, every individual has got different risk appetite. Mr. Abbas has got different one. Mr. Vani has got different one. Hussain Saab has got different one. Yusuf Saab has got different one. Everybody has got different one. Why? Our income is different, Mr. Rajesh. And our family obligations are different. Everybody has got different family. Some are in nucleus family, some have joint family. Some are still unmarried, some have got married but no children. But other one have got married and children also. Parents are living with them. So every individual has got different risk appetite. And Mr. Vani, you should make your investment decision strictly as per your investment appetite. As per your risk appetite. So you must analyze your risk appetite. मैं कितना जोखिम ले सकता हूं, मैं कितना रिस्क ले सकता हूं, सबसे पहले ये सोचना चाहिए. मार्केट में हर तरह के प्रोडक्ट अवेलेबल है मिस्टर रवानी. ऐसे प्रोडक्ट भी है जहां बहुत कम रिस्क है, जहां कोई रिस्क नहीं है, ऐसे भी हैं. गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स हैं. ऐसे प्रोडक्ट भी है जहां बहुत कम रिस्क है, लेकिन ऐसे प्रोडक्ट भी है जहां बहुत ज्यादा रिस्क है. अभी आपको डिसीजन लेना है कि आपको कितना रिस्क के अनुसार कहां पैसा लगाना है. ये डिसीजन आपका सबसे इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टमेंट में मिस्टर वानी. और जिसने ये डिसीजन सही लिया मिस्टर हुसैन, उसने इन्वेस्टमेंट करके पैसा बनाया. और ये डिसीजन लेना कोई रॉकेट साइंस नहीं है. एक हम साधारण पढ़ा लिखा आदमी भी सही डिसीजन ले सकता है. तो पहली बात, अपनी रिस्क एपिटाइट संभालिए, समझिए, उसके अनुसार इन्वेस्टमेंट कीजिए. और दूसरी बात मिस्टर वानी जो आपको समझना है, सोचना है, वो है मैं पैसा किस लिए बचा रहा हूं. आप पैसा किस लिए बचा रहे हैं बताइए आप मिस्टर वानी. व्हाई वी शुड सेव. हमें पैसा इसलिए बचा रहा हूं, घर लेना है, गाड़ी लेनी है, देश विदेश घूमना है, बच्चों की पढ़ाई करवानी है, बच्चों की शादी करनी है, और फिर बाद में रिटायरमेंट की जिंदगी. इसलिए तो पैसा जोड़ रहे हैं ना हम, इसीलिए तो पैसा बचा रहे हैं ना, कि मुझे बड़े बड़े काम जिंदगी में करने हैं. लेकिन वो जिंदगी में काम बड़े बड़े करने हैं, लेकिन मैं पैसा आ रहा है, पैसा बचा रहा हूं, पैसा आ रहा है, मैं ये गलत काम है. हमेशा आपको पैसा बचाना चाहिए, अपने काम, जो काम करना है उसके अनुसार बचाना चाहिए. और वो कैसे संभव है मिस्टर वानी? एक अब्बास साहब, एक छोटी सी बात आपको मैं कहना चाहता हूं, और आपके द्वारा सबको कहना चाहता हूं मैं. ऑल पार्टिसिपेंट्स, आई वांट टू टेल वन थिंग. नेक्स्ट संडे मिस्टर अब्बास, सिट विथ योर फैमिली एट होम. घर में बैठ जाइए अपने परिवार के साथ. मिस्टर वानी, आपको भी कह रहा हूं, परिवार में सबको इकट्ठा, और सबको बोल रहा हूं मैं, परिवार में इकट्ठा कीजिए, बैठ जाइए
सबसे डिस्कस कीजिए व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ। आपको जिंदगी में क्या करना है, क्या क्या करना है। घर बनाना है, गाड़ी लेनी है, देश विदेश में घूमना है, बच्चों को अच्छी पढ़ाई करवानी है, और और फिर बच्चों की शादी करनी, और इसके अलावा भी कोई भी दिमाग आपके बात आता है, तो एक कागज ले लीजिए, एक पेपर ले लीजिए मिस्टर अब्बास। उस पेपर पे 3 कॉलम बनाइए, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम एंड थर्ड कॉलम। इन द फर्स्ट कॉलम मिस्टर बानी, यू जस्ट नोट डाउन व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ। दिस वी कैन से माइलस्टोन्स इन अवर लाइफ, जिंदगी के बड़े काम जो हमें करने हैं, सब लिख लीजिए। जो मैंने बोला उसके अलावा भी आपके को दिमाग में आ रहा है वो भी लिख लीजिए। सेकंड कॉलम में लिखिए ये काम कब कब मुझे करने हैं, अंदाजा लगाइए। प्रिसाइसली ऑफ कोर्स इट नॉट पॉसिबल, बट जस्ट अंदाजा। घर बनाना है 5 साल बाद बनाना है, गाड़ी लेनी है 8 साल बाद लेनी है, विदेश घूमने जाना है 5 साल बाद जाना है, और मतलब बच्चों की पढ़ाई करवानी है वो 25 साल बाद। अगर आपके मैरिज नहीं हुई तो बच्चे, तो पहले बच्चे होंगे फिर मैरिज, फिर बच्चों की पढ़ाई होगी, तो उसको 20-25 साल का समय चाहिए। उसके बाद बच्चों की शादी करनी है 28 साल मान लीजिए, फिर रिटायरमेंट की जिंदगी जीना है 30 साल 32 साल, हर आदमी रिटायर होता है। ये एक नेचुरल चीज है कि आफ्टर सर्टेन पीरियड यू विल गेट रिटायर्ड। इवन इन बिजनेस, इवन इन प्रोफेशन, आफ्टर सम टाइम यू फील बाबा आई एम बिकम ओल्ड नाउ, लेट द न्यू जनरेशन रन द बिजनेस, आई एम गोइंग आउट ऑफ बिजनेस। तो रिटायरमेंट की जिंदगी जीनी है, उसके लिए बहुत पैसा चाहिए। तो दूसरे कॉलम में ये कब कब बड़े काम होने वाले हैं अंदाजा लगाइए, जस्ट एस्टिमेट ओनली मिस्टर वानी, प्रिसाइसली ऑफ कोर्स इट इज नॉट पॉसिबल। एंड थर्ड एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज how much money I will need for all these things। इन चीजों के लिए मुझे कितना पैसा चाहिए, शादी के लिए कितना पैसा चाहिए। मान लीजिए आप, कोई किसी की शादी नहीं हुई मिस्टर वानी, कोई कहता है शादी होनी है 10 लाख रुपए चाहिए, शादी के आगे 10 लाख चाहिए। घर बनाना है 50 लाख रुपए चाहिए, घर के आगे 50 लाख लिखिए। गाड़ी लेनी है 10 लाख चाहिए, गाड़ी के आगे 10 लाख लिख लीजिए। बच्चों की पढ़ाई करवानी है, लिख लीजिए। बच्चों की शादी करनी है, एक अंदाजा लगाइए। फिर रिटायरमेंट की जिंदगी जीनी, उसके लिए पैसा चाहिए, एक अंदाजा लगाइए, लिख ले, अंदाजा, एस्टिमेट ओनली। 2 things I want to tell Mr. Vani for you, all young people like you. Mr. Abbas, you might not be knowing, a good MBA degree from a reputed institute now comes at the cost of around 50 to 20 lakhs. ठीक है, करीब करीब 15-20 लाख रुपए एक अच्छे MBA की डिग्री में आज लगता है मिस्टर वानी, बड़े इंस्टीट्यूट से। मिस्टर वानी, ये आज लग रहा है, जब 25 साल बाद आपके बच्चे पढ़ने जाएंगे, MBA करने जाएंगे, आपने सोचा नहीं होगा जो MBA की डिग्री आज 20 लाख में मिल रही है मिस्टर वानी, 25 साल बाद यही डिग्री 2 करोड़ रुपए में मिलेगी, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। महंगाई की वजह से जो डिग्री आज 20 लाख की मिल रही है रियाज अहमद साहब, 25 साल बाद वही डिग्री 2 करोड़ की मिलेगी। कहां से पैसा आएगा? और खुदा के फजल से अगर आपके पास 2 बच्चे हैं तो 4 करोड़ रुपया केवल बच्चों की पढ़ाई के लिए चाहिए आपको। फिर एक रिटायरमेंट की बात कर रहा हूं वानी साहब, मान लीजिए आप, वानी साहब आपकी उम्र 30 साल है, मान लेते हैं, और आप कहते हैं मेरा घर का खर्चा मैं 30,000 रुपए में मैनेज कर लेता हूं, आई एम मैनेजिंग माई मंथली एक्सपेंसेस विद 30,000। मिस्टर वानी, इट इज टुडे। कभी आपने सोचा है 30 साल बाद जब आप रिटायर होंगे आपको इस घर खर्च के लिए कितना पैसा चाहिए? मिस्टर अब्बास, जो घर का खर्चा 30,000 में चल रहा है, आफ्टर 30 years मिस्टर वानी विल नीड नॉट लेस देन 2 लाख रुपीज पर मंथ बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। हम ध्यान ही नहीं देते रियाज साहब, अरे देखेंगे खुदा करेगा। खुदा ने आपको नीचे भेज दिया, लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी। अब ये बड़ा क्लियर कर लीजिए, खुदा ने आपको नीचे भेज दिया, यहां जमीन की लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी, आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी, आपको ही मशक्कत करनी पड़ेगी, और वो मशक्कत करनी बहुत जरूरी है। और वो मशक्कत दिमाग से ज्यादा करनी पड़ेगी। वो मेहनत की बात नहीं कर रहा हूं आप कोई पहाड़ खोद रहे हैं, मैं दिमाग की मेहनत की बात कर रहा हूं। पैसे से पैसा कमाना मिस्टर हुसैन, दिमाग का खेल ज्यादा है, और दिमाग के खेल में जितना आदमी पहले तैयारी कर लेता है उसको ज्यादा फायदा होता है। तो ये जो चार्ट मैंने बनाया मिस्टर वानी, इसे हम बोलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग, वित्तीय नियोजन। एंड मिस्टर अब्बास, आई विल टेल ऑल ऑफ यू, यू आर ऑल यंग, आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू,
डू यू हैव योर फाइनेंशियल प्लान? अपना फाइनेंशियल प्लान बनाइए। और मिस्टर वानी, ये रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ा साधारण बात है जैसा हमने डिस्कस किया। देखिए, फाइनेंशियल प्लान बनाने के बाद मिस्टर वानी, नाउ पिक्चर विल बी वेरी क्लियर बिफोर यू, हाउ मच मनी यू विल नीड एट व्हाट टाइम एंड फॉर व्हाट पर्पज। वो बाद में बात करेंगे, आपका प्रश्न बाद में लेंगे, एक बार सेशन हो जाए, देन आई विल टेक ऑल द क्वेश्चंस। तो आप ये जो फाइनेंशियल प्लान हमने बनाया, फ्रॉम दैट फाइनेंशियल प्लान मिस्टर वानी, पिक्चर विल नाउ ब्रॉडली क्लियर, कब कब कितना कितना पैसा आपको चाहिए, किस काम के लिए। और साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं मिस्टर वानी, जिसके लाइफ में गोल्स क्लियर होते हैं, टारगेट क्लियर होते हैं, वो ज्यादा मेहनत करता है, वो ज्यादा मशक्कत करता है, उसको क्लियर है बड़ा। तो जब आपके सामने पिक्चर क्लियर है, मुझे गाड़ी खरीदनी है 5 साल बाद, इतना पैसा चाहिए, घर बनाना है इतना पैसा चाहिए, बच्चों की पढ़ाई करवानी है 25 साल बाद इतना पैसा चाहिए, बच्चों की शादी करनी है इतना पैसा चाहिए, रिटायरमेंट की जिंदगी जीनी इतना पैसा चाहिए, आप ज्यादा मेहनत करेंगे। आप हर साल उसको देखेंगे, कितना पैसे मैंने बनाया, मुझे कितना पैसा बनाना है, कितना पैसा बना अभी तक। इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग की इंपॉर्टेंस है। एक और चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए इन्वेस्टमेंट में मिस्टर वानी, दैट इज पावर ऑफ कंपाउंडिंग। एंड पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड मिस्टर हुसैन। एंड व्हाट इज पावर ऑफ कंपाउंडिंग? Power of compounding simply means, Mr. Bani, that whenever I will get some return on my investment, and definitely you will get it. When you start investing, down the line after 3, 4, 5 years, you will start earning return on your investment. So whenever I will start earning return on my investment, I will never consume that return. Never. What I will do, I will simply keep investing that return again. Again, not today, not tomorrow, not for 1 year or 2 years, Mr. Riyaj. Next 20 years, 15 years, 20 years. 15-20 साल तक जितना आपको अगर पैसा बनता है आपकी रिटर्न पे, इन्वेस्टमेंट पे, उसे खर्च मत कीजिए, दोबारा री इन्वेस्ट कर दीजिए। और एक बार नहीं, हर बार कीजिए। और अगर आपने ऐसा 15-20 साल कर लिया मिस्टर हुसैन, आई कैन वाउच फॉर इट, आफ्टर 15-20 years यू विल हैव रीजनेबल मनी विथ यू। लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। हुसैन साहब हाँ तो कर रहे हैं, हाँ साहब करना चाहिए, ऐसा अच्छी बात है। लेकिन हुसैन साहब, मान लीजिए 5 साल बाद आपको किसी इन्वेस्टमेंट पर 5 लाख का आपका फायदा होता है, तो हुसैन साहब का कमिटमेंट है कि 5 साल दोबारा मैं री इन्वेस्ट करूंगा। लेकिन पूरी फैमिली हुसैन साहब के पीछे पड़ जाएगी, अरे बाबा 5 लाख का आपको इन्वेस्टमेंट पे फायदा हुआ है, अब तो स्विट्जरलैंड ही जाना है। उस टाइम हुसैन साहब को कहना पड़ेगा, नहीं, ये 5 लाख री इन्वेस्ट होगा, स्विट्जरलैंड हम जाएंगे, मेहनत करेंगे अलग से, उसकी हम कोशिश करेंगे, लेकिन ये 5 लाख तो री इन्वेस्ट ही होगा। और ऐसा एक बार नहीं होगा, हर बार होगा, 15-20 साल तक लगातार होगा। और अगर आपने कर लिया, you will have reasonable money in your life. That is why, Mr. Vani, power of compounding is 8th wonder of the world. It is termed as 8th wonder of the world. समझिए इसकी इंपॉर्टेंस को, और पावर ऑफ कंपाउंडिंग मानिए। अब आखिरी में हम बात करेंगे पैसा कहां लगाएं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट मिस्टर वानी टू नो वेयर टू इन्वेस्ट मनी, वेयर टू इन्वेस्ट योर सेविंग्स। The first category of investment is governmental scheme. Some government has got some scheme for middle class, salary class person like you and me. And the one and most important scheme I feel personally is Public Provident Fund Account, PPF. And Mr. Bani, I personally feel that every middle class, salary class person should have a PPF account. PPF account can be opened with any of the banks or post offices. You get the details from the website. I don't have time, I would have explained everything in detail. Second thing is National Savings Certificate, NSC. Third thing is Kisan Vikas Patra. Kisan Vikas Patra. Fourth scheme is RBI bonds. Reserve Bank also keep issuing, Dr. Mainul Haq Sahab.
RBI also keep issuing bonds for the public. RBI also keep issuing bonds to us. They also keep raising loan from us. So we can invest in RBI bonds, and Mr. Vani, the present return is around 7.80%. Then you can invest in government securities also. One good scheme, Manuel Haq Saab, for you, if you have a daughter at home, or if you have daughter with any family members, very good scheme of the government of India only for daughter is Sukanya Samriddhi Yojana. Very good scheme for the daughter's education and marriage. So please do think of having this scheme for your daughters as well. Apart from government scheme where we can invest, Mr. Mani, in property in real estate. You can purchase land, you can purchase flat, you can purchase some farmhouse, whatever your capability is. But that is also a risk. How much increase in price of property? You don't know. How much money you will get? Don't know. But of course, property is an option. Third one is Mr. Hussain is gold where we can invest. And historically, we Indians have been passionate about investing in gold. हमारी घर की जो फीमेल मेंबर्स है, हुसैन साहब आपने देखा होगा, they are passionate about gold. And I keep telling in my session, Mr. Vani, your female members have true love only for two things. One thing is for their children, अपने बच्चे, और हुसैन साहब दूसरी चीज है गोल्ड. So husband should not have any illusion that your wife loves you. She loves only her children and gold. This is just joke, but it's the reality. So gold has been an investment proposition, but my dear friends, don't purchase gold in physical form, Mr. Hussain. It is a losing proposition, because suppose you purchase gold today, Mr. Vani, and after 10 years you go to the jeweler back and sell it, they will deduct around 25 to 40% as making charges. That will be a huge loss. So government has come out is a very good scheme that is called Sovereign Gold Bond Scheme, SGB, Sovereign Gold Bond Scheme, where government is encouraging people not to invest in physical gold now, Mr. Vani now. Instead, they should invest in this scheme, and government is giving very good return. And today, only today, a data has come out of the SGP, Mr. Hussain, because this scheme was started in 2015 first time. And the scheme tenure is 8 years, Mr. Vani. The 8 years is completing tomorrow. Those who have invested 1 lakh rupees in that scheme in 2015, Mr. Hussain, after completion of 8 years, that is tomorrow, they will get 2,18,000 rupees. 120% return, 128% return in 8 years. So please think of it. Lastly, where we can invest, Mr. Vani, is share market, securities market. But people do say, share market is nothing, sir, it is a speculation. Ye satta bajari hai. People do say like this. It is not a satta bajari, Mr. Vani. I have been general manager in SEBI. I work in SEBI for 20 years. I can say with confidence that security market is one of the most rewarding investment product. But risk is there. Mind it. And those who don't have knowledge of the market, Mr. Riyaj, must not invest in security market. जिसको सिक्योरिटी मार्केट की समझ नहीं है, उसको कभी भी सिक्योरिटी मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए. ये बड़ा क्लियर मैं आपको बता देना चाहता हूं. इसलिए पहले नॉलेज बनाइए, नॉलेज बढ़ाइए. लेकिन एक और तरीका है मिस्टर वानी, जहां विदाउट नॉलेज की भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं सिक्योरिटी मार्केट में, और उस तरीके का नाम है मिस्टर रियाज, म्यूचुअल फंड. आजकल ज्यादातर लोग म्यूचुअल फंड के बारे में मिस्टर वानी जानना चाहते हैं. व्हाट इज म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड इज नथिंग बट इनडायरेक्ट वे ऑफ इन्वेस्टिंग. आप सीधा पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं मिस्टर वानी,
अपना पैसा किसी को दे रहे हैं, दोज हु आर एक्सपर्ट्स। आप एक्सपर्ट्स को अपना पैसा दे रहे हैं। अब क्यों दे रहे हैं? 3 कारण से। देयर आर 3 रीजन मिस्टर हुसैन। द फर्स्ट रीजन इज आई डोंट हैव नॉलेज, बट दे पीपल आर एक्सपर्ट ऑफ द सिक्योरिटी मार्केट, बट दे आर नॉट गॉड, दे आर एक्सपर्ट्स ओनली। वो खुदा नहीं है, वो सिर्फ विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट हैं। लेकिन आपके हमसे ज्यादा समझ उनको मार्केट की है। दूसरा कारण, हुसैन साहब के पास दिन पूरा फुल टाइम जॉब है और भी काम है, फैमिली का ऑब्लिगेशन है, टाइम नहीं बचता इन्वेस्टमेंट अच्छी तरह देखने का, करने का। उनके पास 24 आवर आपका पैसा संभालने का ही काम है। उनको एक काम आप दे रहे हैं, अपना पैसा संभाल लेगा। और तीसरी बात, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, अनुभव नहीं है। दे हैव गॉट प्लेंटी ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। इन 3 कारणों से हम अपना पैसा वहां म्यूचुअल फंड में लगा रहे हैं। लेकिन पहली बात, म्यूचुअल फंड में रिस्क है। अगर कोई कहता है हुसैन साहब कि म्यूचुअल फंड में रिस्क नहीं है, वो झूठ बोल रहा है। दूसरा कारण, म्यूचुअल फंड में कोई गारंटेड रिटर्न नहीं है सक्सेना साहब, नो गारंटेड रिटर्न। अगर कोई आपको गारंटेड रिटर्न बोल रहा है तो वो झूठ बोल रहा है। कोई गारंटेड रिटर्न, कोई गारंटी नहीं है। कभी ज्यादा हो सकता है, कभी कम हो सकता है। मार्केट ऊपर होगा तो ज्यादा भी हो सकता है, मार्केट कम होगा तो नीचे भी हो सकता है। तीसरी बात, म्यूचुअल फंड में आपको लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं आपको अच्छा रिटर्न मिले। और हुसैन साहब, मैं एक डाटा आपको बताना चाहता हूं। जिन लोगों ने इक्विटी फंड में इन्वेस्ट किया है पिछले 10 सालों में, म्यूचुअल फंड में उनका रिटर्न 12 से 18% पर ईयर आया है। एवरेज, एवरेज बोल रहा हूं मैं, हर साल नहीं बोल रहा हूं मैं। कभी अब 22 भी आया होगा, कभी 15 भी आया होगा, कभी 5 भी आया होगा, कभी 28 भी आया होगा। एवरेज रिटर्न 12% करीब आया है पिछले 10 सालों में। लेकिन म्यूचुअल फंड में फिर दोबारा बोल रहा हूं, रिस्क है, कोई गारंटी नहीं है। इसलिए दोनों बातें जरूर ध्यान रखिए। आप रिस्क ले सकते हैं, गारंटी की एक्सपेक्टेशन नहीं है तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का अभी समय नहीं, अगली बार कभी आप हुसैन साहब चाहेंगे तो हम डिटेल में म्यूचुअल फंड के बारे में 2 घंटा बात कर सकते हैं, जब भी मैं डिटेल में समझाऊंगा, अभी समय नहीं है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है मिस्टर रियाज, थ्रो SIP, सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। And Mr. Riyaj, SIP is nothing. It is just like a recurring account where every month you are investing. मिनिमम SIP की अमाउंट है मिस्टर वानी 500 रुपया, और ज्यादा की कोई लिमिट नहीं है। यू कैन हैव SIP ऑफ 5 लाख रुपीज एवरी मंथ। आप पे डिपेंड करता है आपकी इनकम कितनी है। तो SIP इज ए सिंपली वे ऑफ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स, एंड इट इज ए मैजिक फॉर मिडिल क्लास, सैलरी क्लास पर्सन, बिकॉज यू गेट सैलरी एवरी मंथ। आपको हर महीना कुछ अर्निंग होती है वानी साहब, तो उस हर महीना कुछ SIP चालू कर सकते हैं। मिनिमम SIP का अमाउंट 500 रुपया है, ज्यादा कोई लिमिट नहीं है। और जितना लंबा SIP चलाएंगे उतना ज्यादा फायदा होगा। मैं एक एग्जांपल देके रियाज साहब बता रहा हूं। मान लीजिए रियाज साहब, आपकी उम्र 50, आपकी उम्र 20-30 साल है, वो 20 साल है सॉरी, और आपने एक SIP चालू की म्यूचुअल फंड में 500 रुपए की, केवल 500 रुपए की, और उसको 40 साल कंटिन्यू किया। मतलब हर महीना 500 रुपए आप जमा करा रहे हैं, आपके पैसे अकाउंट से जा रहा है। 40 साल बाद आपके पास एज पर प्रेजेंट कैलकुलेशन 12% का रिटर्न मान के चल रहा हूं वानी साहब में, आपका अमाउंट हो जाएगा 41 लैक्स प्लस। 40-41 लाख से ज्यादा पैसा हो जाएगा। लेकिन रियाज साहब, एक और तरीका इसमें है ज्यादा पैसा कमाने का। हर साल कुछ SIP का अमाउंट बढ़ाते रहिए। आपने 500 से स्टार्ट किया, अगले महीने 550 कर लीजिए, उससे अगले महीने और 600 से थोड़ा ज्यादा कर दी। हर साल कुछ बढ़ाते रहिए, हर साल। क्यों? आपकी इनकम बढ़ेगी, आपकी सैलरी बढ़ती है, आपको इंक्रीमेंट मिलता है। आपका बिजनेस करते हैं वानी साहब तो बिजनेस में प्रॉफिट बढ़ता है, प्रोफेशन में है तो हर साल अगर आप मान लीजिए 10% आप बढ़ाते रहे हैं, पहले साल 500, फिर 550, फिर 550 का 10%, ऐसा हर साल बढ़ाते रहते हैं, तो रियाज साहब
40 साल बाद आपके पास पैसा हो जाएगा 1,78,00,000 78 lakhs। अगर आप फ्लैट 500 रुपए रखते हैं मानी साहब तो करीब करीब 41 लाख होगा। लेकिन अगर आप एसआईपी का अमाउंट बढ़ाते रहते हैं तो आखिरी में अमाउंट बहुत बड़ा हो जाएगा। तो एसआईपी एक बहुत बड़ा मैजिक है नॉर्मल मिडिल क्लास सैलरी क्लास पर। और मिस्टर वानी, मैं ऐसे बहुत फ्रेंड्स, आप जैसे फ्रेंड्स को जानता हूं जिन्होंने एक एसआईपी नहीं 5-5 6-6 एसआईपी स्टार्ट की हुई है। और सारी एसआईपी टारगेट ओरिएंटेड एसआईपी है। एक एसआईपी से घर बनाना है, एक एसआईपी से गाड़ी लेनी है, एक एसआईपी से विदेश घूमने जाना है, एक एसआईपी से बच्चों की पढ़ाई करवानी है 25 साल बाद, एक एसआईपी से बच्चों की शादी करनी है, और एक एसआईपी से अपनी रिटायरमेंट की जिंदगी जीनी है। तो यू कैन हैव मल्टीपल एसआईपी प्रोवाइडेड यूर एज पर योर इनकम एंड योर फैमिली ऑब्लिगेशन। तो एसआईपी म्यूचुअल फंड में मिडिल क्लास के लिए मैजिक है। लेकिन मेरे कहने से बिल्कुल एसआईपी मत करना मिस्टर वानी। आई विल नॉट बी गेटिंग एनी कमीशन। आई एम वेरी क्लियर। नेवर स्टार्ट एसआईपी व्हाट आई बिकॉज आई एम सेइंग अंडरस्टैंड एंड हैव नॉलेज बिफोर स्टार्टिंग एसआईपी। और वो नॉलेज कैसे मिलेगी रियाज साहब? एक वेबसाइट का नाम बता रहा हूं, आप नोट कर लीजिए। उस वेबसाइट का नाम है म्यूचुअल फंड सही है। आपने ऐड भी देखा होगा वानी साहब, अगर टीवी में ऐड देखे होंगे अगर आपने। म्यूचुअल फंड सही है इस नाम से एक वेबसाइट एम्फी ने खोली है। और इस म्यूचुअल फंड सही में सब कुछ इंफॉर्मेशन म्यूचुअल फंड के बारे में, एसआईपी के बारे में और सारी स्कीम्स के बारे में आपको वहां मिलेगी। मिस्टर वानी, स्पेंड सम टाइम, इट इज योर मनी। पैसा कमाना है, पैसा बनाना है रियाज साहब, तो पहले जानकारी लेनी चाहिए। पहले जानकारी लीजिए, 1 महीना 2 महीना 3 महीना समझिए, पढ़िए पूरा। उसमें सारा मटेरियल है, बहुत मटेरियल है, हर भाषा में, हर लैंग्वेज में उसमें मटेरियल है। धीरे धीरे पढ़िए, समझिए। फिर अगर आपको लगता है कि हाँ ठीक है तो फिर एसआईपी चालू कीजिए। मेरे कहने से बिल्कुल मत करना। अगर आपको लगता है हाँ ठीक है तो फिर चालू करना। आखिरी में म्यूचुअल फंड बहुत बड़ा टॉपिक है, अगली बार हुसैन साहब अगर मौका देंगे तो हम आगे बात करेंगे। आखिरी में 2 बात एक बार जरूर कहना चाहता हूं वानी साहब। कभी भी पैसा गलत जगह पॉन्जी स्कीम चिट फंड कमेटी में मत लगाना। कश्मीर में भी ऐसे बहुत लोग घूम रहे होंगे हुसैन साहब, जो आपको लालच देंगे, आपका पैसा 4 साल में डबल कर देंगे, आपको ये फायदा होगा, आपको वो फायदा होगा। मिस्टर वानी, दे आर ऑल फ्रॉड्स। वो आपके पैसे के लुटेरे हैं। वो पैसा लूट के भग जाएंगे, एक दिन दुकानदारी बंद करके चले जाएंगे, आपका पैसा डूब जाएगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कभी भी पॉन्जी स्कीम चिट फंड कमेटी में पैसा मत लगाना। और म्यूचुअल फंड पॉन्जी स्कीम चिट फंड नहीं है मिस्टर वानी। इट इज रेगुलेटेड बाय सेबी विच इज द रेगुलेटर ऑफ सिक्योरिटी मार्केट। ये अब्बास साहब, ये रेगुलेटेड स्कीम है, ये पॉन्जी स्कीम नहीं है, ये चिट फंड नहीं है। इसलिए कभी भी चिट फंड में मत लगाना। और अब्बास साहब, आप समाज सेवा भी कर रहे हैं। हुसैन साहब को मैं सबको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जो भी अपने आपके फ्रेंड्स हैं, आपके जो लोग जानकार हैं, आपके अच्छे जो लोग हैं, चाहे आपका दूध वाला हो, सब्जी वाला हो, टैक्सी वाला हो, इलेक्ट्रीशियन हो, प्लम्बर हो, कोई भी आदमी हो, वानी साहब उनको सबको समझाइए कभी भी लालच में आकर गलत जगह पैसा नहीं लगाना है। उनका पैसा डूबेगा ही डूबेगा, ये गारंटी मैं देता हूं आपको। क्योंकि उन जो पैसा लेके, उनके पास कोई बिजनेस मॉडल नहीं है वानी साहब। वो झूठा वादा कर रहे हैं आपसे कि आपका पैसा 4 साल में डबल कर देंगे। वो जब तक डबल करेंगे जब तक अगला पैसा उनसे और नए लोग उसमें फंसते नहीं रहेंगे। जिस दिन नए लोग आना बंद हो गया वो दुकानदारी बंद करके गायब हो जाएंगे। और हमारे देश में अब्बास साहब करीब करीब 10 लाख करोड़ रुपया ऐसा डूब गया है गरीब लोगों का। क्योंकि ज्यादातर उसमें जो मिस्टर वानी जो पैसा लगाते हैं वो गरीब लोग होते हैं। वो लालच में आ जाते, पढ़ा लिखा आदमी कोई पैसा नहीं लगाएगा उनमें, लेकिन गरीब लोग बेचारे लालच में आ जाते हैं, उनको पता नहीं होता। इसलिए आपका और मेरा, अब्बास साहब और हुसैन साहब और मैं, रियाज साहब और वानी साहब और सबको रिक्वेस्ट करूंगा, ये सोशल कॉज है हमारा सबका, इसमें भी आप आगे बढ़ाइए।
उनको समझाइए हर जगह पैसा नहीं लगाना है। और लास्ट बात जो मैं कहना चाहता हूं आप सबको, मिस्टर वानी, एंड थ्रो वानी टू ऑल पार्टिसिपेंट्स, प्रॉस्पेरिटी योर राइट। मिस्टर वानी, प्रॉस्पेरिटी हमारा राइट है, एंड प्रॉस्पेरिटी डजंट मीन मिस्टर अब्बास टू बी मुकेश अंबानी। मेरा डेफिनेशन प्रॉस्पेरिटी का मुकेश अंबानी बनना नहीं है मिस्टर हुसैन। मेरा डेफिनेशन प्रॉस्पेरिटी का है मिस्टर वानी, आई शुड हैव मनी फॉर माई नीड्स, I should have money for my family obligations. I should have money for my comfortable life. And I should have money for my normal human desires. इतना पैसा मेरे पास होना चाहिए वानी साहब, ये मेरी प्रॉस्पेरिटी है। और फिर दोबारा बोल रहा हूं, ये आपका और मेरा सबका अधिकार है। इट इज योर राइट टू बी प्रॉस्पर। और एक बात में और, शायद आपके कुछ लोग ऐसे होंगे वानी साहब, खुदा करे ऐसा ना हो, लेकिन अगर कोई है जो ये समझता है कि मैं गरीब परिवार से हूं, आई एम फ्रॉम ए पुअर फैमिली, आई एम नॉट फ्रॉम ए रिच फैमिली, तो हुसैन साहब मैं उसको एक ही बात कहता हूं हमेशा, बर्थ इन ए पुअर फैमिली इज नॉट ए कर्स एट ऑल। गरीब घर में पैदा होना रियाज साहब कोई अभिशाप नहीं है, कोई गलत बात नहीं है, भूल जाइए। आज से बात खत्म, अगर कोई किसी में हम कहाँ पैदा हुए हैं। लेकिन गरीब होकर जिंदा रहना और गरीब होकर मरना अभिशाप है। Living as poor and die as poor is a curse which we all can avoid if we manage our money properly, efficiently, save the money, invest the money in a best investment product. You will all be prosper. खुदा को यही मैं इल्तिजा करता हूं आपके सबके लिए, आप सब प्रॉस्पर बने। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। Now the forum is open for questions. You're all just raise your hand and we will unmute you. Any question from any participant, they are welcome. Please come forward and ask the question. Mr. Bani, you had raised the hand in between. Yes, sir. I have a question, sir. Yeah, most welcome. सर, आपने बताया कि री इन्वेस्टमेंट अगर हम करेंगे, ठीक है सर, मैंने एक बिजनेस खोला है, ठीक है सर, अब तो बोलिए। अगर मैं उसमें कैपिटल अपना लगाऊं सर 10 लाख, ठीक है सर, और एक साल के बाद मैंने उसमें कमाए हैं और मेरा प्रॉफिट हुआ मतलब 1 लाख, तो मेरा कितना हुआ सर? 11 लाख। हाँ, ठीक है सर। और सर मैं ये चेक कहना चाहता हूँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ सर, अगर हम एक 11 लाख तो आए सर, ठीक है सर, तो ये भी सोचना है हमें, तो अगर हम री इन्वेस्टमेंट वो 1 लाख करेंगे तो लॉस में भी चला सकते हैं ना सर हम, तो इसमें रिस्क भी ज्यादा है ना सर बिजनेस का मतलब ही रिस्क है वानी साहब। यही तो मैं सर बता रहा हूँ ना सर, आपने बिजनेस में रिस्क है, वो इन्वेस्टमेंट में रिस्क है। देखिए, यस इसमें इन्वेस्टमेंट और बिजनेस का एक गोल्डन रूल है, शायद आपको पता होगा, हुसैन साहब को जरूर पता होना चाहिए। रिस्क है तो रिवार्ड है। Obviously. अगर आप रिस्क लेंगे तो रिवार्ड के चांसेज हैं, आप रिस्क मत लीजिए, आप बिजनेस मत कीजिए, बात ही खत्म हुई। अगर आप रिस्क ले रहे हैं वानी साहब, तो 10 लाख का 20 लाख भी हो सकता है, क्योंकि आपने रिस्क लिया है। और हम बिजनेसमैन को और इंडस्ट्रियलिस्ट को यूसुफ साहब और वानी साहब हम गाली देते हैं, अरे वो बिजनेसमैन है, वो इंडस्ट्रियलिस्ट है। नहीं वानी साहब, उन्होंने सर, रिस्क लिया है। बताया कि म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट ना करें कि उसमें रिस्क ज्यादा है। नहीं देखिए, अगर आप देखो, दोनों अलग अलग बातें हैं। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं यूसुफ साहब, तो फिर कोई मुकाबला ही नहीं है। आप बिजनेस में पैसा लगाएंगे ना, फिर आप म्यूचुअल फंड में नहीं लगाएंगे। लेकिन मैं जो बात कर रहा था वानी साहब, वो कर रहा था मिडिल क्लास, सैलरी क्लास आदमियों की ज्यादा कर रहा था मैं। नौकरी पेशा लोग हैं, हर आदमी तो बिजनेस नहीं करता है, हर यस आदमी सर। तो मोहम्मद यूसुफ नहीं है। बहुत लोग नौकरी भी करते हैं, तो नौकरी करते हैं, वो बिजनेस तो करते नहीं है। तो उनके लिए इन्वेस्टमेंट का तरीका है एक म्यूचुअल फंड। लेकिन जो बिजनेस कर रहे हैं, नेचुरली वो म्यूचुअल फंड में कम लगाएंगे, वो अपने बिजनेस में ज्यादा लगाएंगे, क्योंकि वो बिजनेस में ज्यादा फायदा होने की संभावना है। तो ये तो बड़ा पिक्चर बड़ी क्लियर है वानी साहब। मैं कभी ये नहीं कह रहा कि अपने बिजनेस में पैसा मत लगाइए। और फिर दोबारा बोल रहा हूं आपको, रिस्क सब जगह है। म्यूचुअल फंड में भी रिस्क है, बिजनेस में भी रिस्क है। अब आपकी चॉइस है, आप क्या करना चाहते हैं।
और प्रश्न किसी का? Hi, good evening everyone. I'm audible? यस या हाँ बोलिए। हाँ जी, आलम अब्बास जी बात कर रहा हूँ मैं एक्चुअली आपने बहुत ही अच्छी बात कही है सूर्यकांत जी की SIPs या SGB किसान विकास पत्र NSG पब्लिक प्रोविजनल फंड अकाउंट टर्म लाइफ इंश्योरेंस के बारे में जो अच्छे एक प्लेटफॉर्म है। अगर मैं ये साइड बाय साइड भी थोड़ा सर्च कर रहा था, these are like ये ऐसा लूट मार नहीं है कि आपको एक ही टाइम पे मतलब 10 लाख रुपए 1 लाख रुपए होने चाहिए कि आप कब से स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब एक मिडिल क्लास या एक इकोनॉमी जिसके पास आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे चीजें हैं कि इंसान इन्वेस्ट नहीं कर पाए, बट यहाँ से आप बिल्कुल ही जीरो इन्वेस्टमेंट भी नहीं बोल सकते, बिल्कुल कम इन्वेस्टमेंट में आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज है कि जो आज की यूथ है जिनको आज पता नहीं है कि अगर मेरे पास भी 1 लाख रुपए थे, मेरे को अभी तक पता नहीं था कि मैं कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ। इट्स अ वेरी बेटर आइडिया कि यू कैन गिव मी द राइट वे, देन व्हाई आई एम इन्वेस्टिंग द मनी इन अ प्रॉपर वे। एंड हमें ये भी अच्छा लगा कि आफ्टर सम टाइम कि हम इसके रिटर्न अच्छे ले सकते हैं। और थैंक यू सो मच आपके लिए सर कि आपने इतना टाइम दिया हमें। आप इतनी देर से बताते रहे हमें कि सही गाइडेंस करते रहे। बाकी मेरी तरफ से और कोई प्रश्न नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं फिर थैंक यू। दोबारा कहना चाहता हूं वानी साहब, पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, पैसे से पैसा बनाना बुरी बात नहीं है। यूसुफ साहब, आप मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे, अच्छी जिंदगी जीना बुरी बात नहीं है, बच्चों को अच्छी पढ़ाई देना बुरी बात नहीं है। ये जरूरी है। हर इंसान अच्छा जीना चाहता है, हर इंसान चाहता है मेरा घर अच्छा हो, हर इंसान चाहता है मेरे घर में सब चीजें हो, हर इंसान चाहता है मेरे बच्चे अच्छी पढ़ाई करें। कौन नहीं चाहता है रियाज साहब? आप नहीं चाहते क्या? हर आदमी चाहता है। कुछ नहीं, हर कोई चाहता है। हम कोई भी हो, कहीं भी रहते हो, हमारा परिवार तो है। और मेरा परिवार है तो मैं भी चाहूंगा मेरा परिवार अच्छा रहे, अच्छे घर में रहे, अच्छी गाड़ी मेरे घर में हो, बच्चे मेरे अच्छे स्कूल में पढ़ने जाएं, बड़े आदमी बने और मेरे से ज्यादा आगे बढ़े। ये हर आदमी चाहता है। उसके लिए वानी साहब पैसा चाहिए, ये कड़वी सच्चाई है। और पैसे का काम हुसैन साहब पैसे से ही होता है। Obviously. बाकी काम सब हो सकते हैं दूसरी चीजों से, लेकिन पैसा का काम पैसे से ही होगा। इसीलिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हम पैसे के इंपॉर्टेंस को लाइफ में समझें। और जितनी जल्दी समझेंगे, जितनी जल्दी समझेंगे, उतना रियाज साहब आपको ज्यादा फायदा होगा। समझते सब हैं। इस दुनिया में दो तरीके हैं यूसुफ साहब जिंदगी में समझने के। एक तरीका है दूसरों की गलतियों से सीखा जाए। मैंने गलतियां की, मैंने आपको बताया वानी साहब मैंने गलतियां की है। एक तो आपका रास्ता है कि आप मेरी गलतियों से सीखें, एक दूसरा और रास्ता है, खुद गलती करें, ठोकर खाएं, फिर सीखें। ये हर आदमी ऐसा करता है, अपनी गलतियों से हर आदमी सीखता है। लेकिन एक दूसरा तरीका भी है, दूसरों की गलतियों से भी सीखिए। तो अगर मैं कुछ कहता हूं रियाज साहब कि मैंने गलती की है, आपके पास मौका है वो मेरी गलती से सीख सकते हैं, वरना तो ठोकर खाएंगे ही, सीखेंगे ही, उसमें तो कोई दोहराई नहीं है। और किसी का कोई प्रश्न किसी का हो तो, वरना आज फिर यूसुफ साहब खत्म करते हैं इसे, आज बंद करते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? और I think कोई प्रश्न नहीं है, ठीक है। तो मैं दिल से, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ यूसुफ यूसुफ साहब का, हुसैन साहब का, और पूरी आपकी पूरी टीम का, कि जो आपने मुझे मौका दिया आपसे रूबरू होने का, बात करने का। खुदा करे मैं आपके वहां भी आऊंगा, मेरी इच्छा है आपसे आके मिलूं, हम और बड़े प्रोग्राम आपके साथ करें आगे। जैसा खुदा की मर्जी होगी हम आगे ऐसा करते रहेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। thank you so much, sir, for joining us and with your precious. It was a very wonderful lecture from your side and precious. Especially, you have just Alam Abbas have recently said that you have elaborated difference which we are not aware about, that there's Kisan Vikas, NSC, PPF, and how we can make a target setting in a business standard, and how we can start on a very little amount, how we can set a goal setting and reinvestment and different paths you have mentioned.
it was wonderful for us, all of us who have joined this meeting, and especially I want to thankful to you and all who joined us, and our host and our director, Mr. Muhammad Yusuf sir, Director Tawaqal Solutions Private Limited, and other guests Alam Abbas sir and other Wani sir, and given this opportunity. And I hope that all of them been satisfied, because I'm watching, and there is one more request to all the group members who have joined in this meeting. There is an Google link. There's an I mean, it's a feedback link given in the chat box. Kindly click on that and write down your fill this form and write down your feedback, and all of them will get e-certificate after this completion. This meeting has been recorded also, and it was also live on. So at the end, I was to thankful all of them, especially Shri Ahmad sir, for joining us, and your we can say, sir, your advices, your suggestions, everything is very wonderful for us and wonderful for all of us to start our business, give good ideas for the this generation of youth, especially how we can start our business and how we can go ahead. Thank you so much for joining us, and towards Yusuf sir and the host, they will proceed. Hussain Saab, on my behalf and on behalf of Amfi, I am thankful to all of you, particularly Mohammed Yusuf Saab, Wani Saab, Riyad Saab, or those who have been with me in this program, Mr. Hussain particularly, for joining this program and for giving me opportunity to be with you in this program. I will be happy to continue it